न्यूयॉर्क में सुर्ख रंग का ये ट्रक आपको जहां भी नजर आए तो समझ जाएं ये पाकिस्तानी व मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि जिसके तहत कोरोना वबा की वजह से मुआशी मुश्किलात के शिकार न्यूयॉर्कर्स में बिला इम्तियाज ताज़ा व गर्म खाना तकसीम किया जा रहा है। हंगर ट्रक के नाम से इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी पेस ने मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम्स गिविंग बैक के इश्तराक से लॉन्च किया। काशिफ, हुसैन, मोहम्मद बाही, एहसन चुगताई और असरा राशिद समेत उनके साथियों के ज़ेर एहतमाम हंगर ट्रक की लॉन्चिंग तकरीब में यूएस कांग्रेस वुमेन अवेट क्लार्क, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्रुकलिन एरिक गंजालस, न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक एडवोकेट जमानी विलियम्स और नौ मुंतखब स्टेट असम्बलीमैन ज़ोहरान ममदानी ने खुसूसी शिरकत की और हंगर ट्रक प्रोजेक्ट को शानदार अल्फाज में सराहते हुए कहा कि न्यूयॉर्कर्स की बिला इम्तियाज खिदमात मुस्लिम व पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की पहचान बन गई है। कांग्रेस वुमेन अवेट क्लार्क का कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमात खल्क मिसाली हैं। इस किरदार से हम मजबूत होंगे और मुश्किल हालात से निकल आएंगे। This is just a continuation of the charity, of the goodwill, of all that this community has demonstrated over many generations. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एरिक गंजालस का कहना था कि उन्होंने एक गरीब घराने में परवरिश पाई जिसको कतारों में खड़े होकर खाना लेना पड़ता था। मुझसे बेहतर मुश्किल हालात में मदद करने वालों के किरदार को शायद ही कोई समझता हो। I grew up in a hunger, insecure home. I grew up in a home when I routinely waited on food lines as a child. That family members had to bring food to my house when it was just me and my mom. And so for those who do more for others, all I can say as the Brooklyn DA, that's in fact how we take care of each other during the pandemic. That's how we take care of each other at other times in our life. असम्बलीमैन ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि खिदमत खल्क और लोगों के दुख दर्द में शरीक होने जैसे काम ही हैं जिसकी वजह से मैं आज न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली में पहुंचा हूं। We are a community just like any other, and we have the humanity that comes with that. And for me, what makes me so proud to be a member of the Muslim community is the essence and the practice of solidarity. And this truck is the bringing of that notion to fruition. To feed every person that is hungry, regardless of who they are, where they come from, or how much money they have in their pocket. And so I am here today to say thank you to the Pakistani American Youth Society, to Muslims Giving Back, and to everyone who has helped make this moment a reality. पब्लिक एडवोकेट जमानी विलियम्स का कहना था कि हमारा मीडिया बिलअमूम मनफी खबरों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता है। मैं समझता हूँ कि कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन पर मौजूद हंगर ट्रक प्रोजेक्ट हमारी मुस्लिम व पाकिस्तानी कम्युनिटी की सही पहचान है। I'm so happy to see the media here because we absolutely have to lift up some of the good news that's going on in our city. Very often the news is focused on the negativity, and there are two things happening here. In particular, very often when the Muslim community is viewed on our networks, it's in such a terrible light, and we have a tendency to look at one or two negative folks and pretend that's the entire community. But right here, you actually get to see the actual real community. You get to see the real Muslim community, the real Pakistani community, what they do for the community. This is what should be shown. And more generally, when we see these negative stories, these are the things that we have to push back on. I am so proud of local community organizations that filled the gap when government didn't know what to do or didn't have the ability to provide the resources that are needed. पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी के काशिफ हुसैन ने बताया कि हंगर ट्रक न्यूयॉर्क में बेघर और मुस्तहिक अफराद में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खाना तकसीम करता रहेगा। While everybody was afraid during the pandemic, the beginning, when the information wasn't coming down or disseminating from federal, state, and city to the communities, these are the folks in hundreds that actually flock to the street to make sure that we provide not only and address the food insecurities, but also bring the antibody testing and other COVID-19 resources and other resources like rent relief, whatever shape or form they may be, to the streets. Because हंगर ट्रक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक तहरीर है कि जिसमें भूखों को खाना खिलाने की तालीमात दी गई हैं। मुस्लिम्स गिविंग बैक के मोहम्मद बाही का कहना था कि हम इसी हदीस मुबारक के तहत
बिला इम्तियाज खिदमात अंजाम दे रहे हैं। And one word of our Prophet Muhammad that really inspired us to continue to give back is where he, peace be upon him, said, "O people, spread peace and feed the hungry." So for the last 7 years, Muslims Giving Back has been feeding the homeless, the community across New York City in a volunteer manner. All of us, all our members are all volunteers. This is something we do extra, right? There's no paycheck involved, no income, no nothing. It's just the passion that we have to give back and represent our faith, right? Represent our faith through action. न्यूयॉर्क के जहां कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर की आमद है, इन हालात में हंगर ट्रक को मुआशी मुश्किलात का शिकार न्यूयॉर्कर्स एक ब्लेसिंग करार दे रहे हैं। मोहसिन ज़हीर, चैनल 5 न्यूयॉर्क।